Our vision moved a step forward when we realized that we can help families also. We can do more than just distributing clothes. When we're talking about upcycled fabrics, so for me as a designer, what others might see as constraints, for me it actually enhances the creative process because it gives you a deeper meaning and a deeper sense of purpose. So we have been encouraging people to actually bring their clothes that they do not, they see no use in it or something, instead of just giving it away, to get a quilt or something which something made that they will actually use it. कि जो आदमी लोग सफेद कपड़े पहनते हैं वो कपड़े पुराने हो जाते तभी उसमें से वो धोकर उसमें से गोदड़ियाँ बनाते थे. So our main purpose was to like reuse or recycle the already existing clothes or fabrics that were there in the market. You know how much we people are recycling per day, particular Panipat? It is around 10 lakh kg per day. Welcome to our special telethon. I'm Gargi Rawat. Namaskar, मैं हूँ सिकता देव. The Clothes with a Conscience campaign is about building conversations and awareness around repurposing textiles and sustainable fashion, as well as saving our planet from even more waste. In season 1, we talked about fast fashion, the amount of waste it generates, and sustainable alternatives. In season 2, the conversation has been about how to keep out discarded textiles from our landfills. If we go by statistics, we're looking to keep 1 million tons of textiles from polluting our soil, water, and air. Instead, we can donate, recycle, repurpose, upcycle, reinvent, innovate to give these textiles a new life, a new use, a new home. This campaign has featured brands and individuals who are promoting recycling, upcycling, and putting old textiles to innovative use for social welfare, infrastructure needs, and a lot more. बिल्कुल, और NDTV की ये मुहिम आपसे, हम सब से जुड़ी है. हम अपने भविष्य को लेकर कितने संवेदनशील हैं. हम अपने पर्यावरण और जलवायु यानी एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को सहेज कर रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए ऐसा क्या कदम उठाएं कि आप और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और साफ जलवायु और पर्यावरण दे सकें. यही इस मुहिम का मकसद है, क्लोथ्स विद अ कॉन्शियंस. कैंपेन के जरिए हम ये समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फास्ट फैशन के क्या खतरे हैं, साथ ही ये कि हम कैसे हमारे कपड़ों और पहनावे को लेकर हमारी चॉइसेस पृथ्वी को बचाकर रखने में अहम साबित हो सकती है. हम इस कैंपेन के सीज़न 2 के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो आज हम सब इस पर नज़र डालेंगे कि इस्तेमाल में ना आने वाले पुराने या आउट ऑफ फैशन कपड़ों को कूड़े के ढेर या कचरों के पहाड़ तक ना पहुंचाकर उसका दोबारा इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि सिर्फ भारत में ही सालाना 1 मिलियन टन टेक्सटाइल हमारी धरती, हमारी हवा, हमारे समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं. Well, to talk more about this, we have experts and guests with us. Pabiben Rabari, an artisan, will be joining us. Raman Datta, General Secretary, Brands and Sourcing, Leaders Association, joins us in studio. And also Priyanka Khanna, Head of Asia Expansion, Fashion for Good. Thank you so much for joining us today on this very important issue over which we need to create a lot of awareness. So Raman Datta, first to you. You work with various fashion brands, and recycling is a part of many of our existing crafts or even household habits, and we will be hearing more about that from Pabiben. But how much of this has seeped into the industry? How are brands conscious about this? Is this something they think about? Yes, this is one of the biggest initiatives which is happening globally. Like my association is basically comprised of all Indian domestic brands and international brands like Zara, Mango. All the international brand heads are our members, and sustainability, recycling, reuse, all this is one of the major initiatives we guys are working on. And what we can do is, until unless we create a market for a reused product or a recycled product, supply chain will not start producing it. So first is we are creating a demand, and demand is reaching all the manufacturers and the supply chain partners, and it is becoming a very important commodity. So brands like H&M, they are installing machines inside the stores where you can actually recycle a product.
and in fact water consumption, all those things are taken on a very, very serious note by the brands. All right, so it's interesting you talked about creating that demand. I think through this campaign, that's what we're trying to do, create, awareness around this issue. Priyanka Khanna, you have co-authored a report called Wealth in Waste that talks about the economic potential of bringing textile waste back into the supply chain. So if you could tell us a bit about that. Thank you, and thank you for having me. Wealth in Waste explains that currently there is actually, as mentioned before, a really robust textile waste value chain, which means that in India, all this waste that we've estimated actually is getting used somewhere or the other. However, if it was streamlined, if there was a proper process of collection, sorting, recycling, all put in place, then actually we could recover the output from this waste could be actually going into new fibers for the textile industry instead, for the fashion industry. For example, at the moment, a lot of the things that get recycled go in, different use cases of upcycling. They go into automotive industry, Viper industry, home textiles. But the purpose is really, this is a massive opportunity that we are sitting with that needs to come back into the textile industry again. And potentially competing with fibers like cotton and viscose and generating the similar economic value that comes from cotton and viscose industry. In our report, and I know you mentioned 1 million tons before, in our report, Wealth in Waste, we estimated 7 million tons of waste being generated annually. This is a textile waste feedstock coming from imported, domestic, and factory waste included, all of this. And 60% of this is actually cotton rich, which means almost 4.5 million tons of waste annually, which has huge opportunity for recycling, which can be recycled either really high quality mechanical and get a cotton fiber like output, or it could be chemically recycled to get viscose like output, which means potentially 60%, 4.5 million tons annually could be more new type of new next generation material or cotton and viscose and create the same economic value there. But what really needs to happen to capture this value is to actually India to invest in really high tech advanced recycling technologies, some of it to be brought to India, some of it developed in India. And these are the technologies that need this sorted supply chain. They need really high quality textile waste. जी रमन, ये बताइए कि आप ब्रांड्स का क्या रोल देखते हैं और कितना अहम रहा है उनका रोल रीसाइकलिंग में? जागरूक कैसे करें वो कंज्यूमर्स को कि वो कपड़ों को लेकर एक तरह से सतर्क रहें कि वो लैंडफिल या कूड़े के ढेर में ना पहुंच पाए? तो इसका एक बहुत स्पष्ट आंसर है। फास्ट फैशन का नया नाम है कॉन्शियस फैशन। तो ब्रांड्स कॉन्शियस फैशन को बहुत ही अभी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई थिंक ब्रांड्स कैन मार्केट and brands can make people reach कि conscious fashion is very very important। और brands जो awareness create कर सकते हैं to a customer level, वो शायद manufacturing units और छोटे छोटे platforms नहीं कर सकते। So दूसरी चीज़ brands क्या कर रहे हैं, they are taking out stories, a very small unsung story, maybe a place from Gujarat or from Tirupur, and they are highlighting it in the globe। सो अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस अगर हमने इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा नहीं समझाया, आई थिंक दैट इज़ अ मेजर कॉज, एंड आवर पॉपुलेशन इज़ लाइक 65% यूथ, एंड स्मॉल इनिशिएटिव्स वेयर द अवेयरनेस और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। मतलब अगर मैंने एक टी शर्ट खरीदी है तो उसके कारण मैं 1000 पेट बॉटल्स का पानी मैं सेव कर पाया हूँ। मतलब ये अवेयरनेस के बहुत सारे तरीके हैं, एंड वी हैव टू टच द हार्ट ऑफ अ कस्टमर to get that awareness on this, and brands are playing a major role। जी, गुजरात से रबाड़ी कम्युनिटी की पबी बहन कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगी, लेकिन साथ ही आप जुड़ रहे हैं नीलेश प्रियदर्शी जो फाउंडर हैं कारीगर क्लिनिक के। नीलेश, स्वागत है आपका इस कैंपेन में। और मेरा सवाल आपसे ये है कि कारीगर क्लिनिक कला, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स की विरासत को बचाकर रखने में बहुत काम करी। ये बताइए कि सेकेंड हैंड कपड़ों का इस्तेमाल क्या आपके लिए एक नेचुरल प्रोसेस रहा है, फिर या फिर आप लोगों ने ये रास्ता बहुत सोच समझ कर चुना है? और जो कारीगर आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो पॉजिटिवली समाधान को वाकई अपनाना चाहते हैं? बिल्कुल। तो ये पूरा जो पुराने कपड़ों का यूज करना या इसको अपसाइकल करना, रिसाइकल करना, ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा रहा है। पुराने जब समय में अगर हम देखते हैं तो कपड़ा जो बनाते थे बुनकर, लोकल रॉ मटेरियल, रिसोर्सेस और लोकल टेक्निक से वो बनाते थे। और ज्यादातर अगर हम देखते हैं हमारा ट्रेडिशनल जो क्लोथिंग था वो धोती और साड़ी था। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के अनुकूल था, लूज फिटिंग था
और साथ में उसका बहुत ही अच्छा फायदा ये था कि वो अनस्टिच था, तो कोई भी एज ग्रुप के लोग उसको यूज कर सकते थे। हमारी परंपरा रही है कि छोटे बच्चे को बड़े बच्चे के कपड़े पहनाए जाते थे, पिता के कपड़े फिर बच्चा बड़ा हो जाता तो उसको यूज किए जाते थे, बेटी अपनी मम्मी के कपड़े यूज करती थी। तो ऐसे ही ये हमारी परंपरा चली है कि नए कपड़े नहीं बट पुराने कपड़े यूज किए जाए। आज भी हमारे ट्रेडिशन में यह है कि दिवाली के टाइम में हम कपड़े डोनेट करते हैं, पुराने कपड़े या नए कपड़े भी डोनेट करते हैं। इवन अहमदाबाद में हमारे यहाँ एक 600 ईयर ओल्ड मार्केट है, रविवारी मार्केट, जहां पर पुराने कपड़े आकर लोग बेचते हैं, अपसाइकल कपड़े बेचते हैं। तो मुझे लग रहा है ये हमारी परंपरा है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। और आर्टिसन आज भी अपने काम में अपसाइकलिंग को बहुत खुशी खुशी अपना रहे हैं और नई जनरेशन उसको अडॉप्ट कर रही है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। All right, Priyanka, now we just heard about the Karigar Clinic and artisans that they're working with. If you could tell us, are there other such initiatives as well, and what are the challenges in scaling up such initiatives? Because really that's the need of the hour. We need to scale it up and use the recycled materials for the industry as a whole. Yeah, and this is an incredible initiative, of course, and there's so many that come at ground level, initiatives that are really building ground up. And in local communities and as part of our work and research, we also mapped quite a few of these initiatives to understand what role they have to play in the ecosystem. Of course, they have a massive role in educating consumers, actually educating the tier 2 and tier 3 where bigger brands can't even reach. And that makes them more important in the industry. But on the flip side, there are also these bigger initiatives, the bigger recycling that is happening in Panipat, for example, or collection work that's happening in Tirupur, etc. And sorting centers where all the secondhand needs to be generated somewhere. Those need a lot of scaling too. And I think the question we need to ask is not how we just scale these initiatives, but for us to first use recycled materials or increase the use of recycled materials, we have to have enough recycled material that can match the performance of existing materials. अभी problem ये भी है हमारी industry में कि anything that is available now in recycling, they might not match the standards of existing materials. So smaller initiatives में ये फिर भी चल जाता है, but when we talk about bigger initiatives or taking it to the bigger brands where bigger volumes of impact comes in, we cannot use these materials right now. So I think the big challenge in scale up is how do we get the right quality of recycled materials in the space that match this. The second, of course, is awareness. Awareness has to be brand level driven, yes, because bigger brands can reach the information, bring the information to the consumers, but everybody has to work together. For all the consumers to work together, brands need to be creating this communication message that what is the impact, as very rightly said before, but also organizations like this really need to come and meet the consumers. So all of that is very important. One big challenge of scaling up is also price. At the moment, jitne bhi conscious consumers hain, they think of recycled materials as very expensive and sustainability as very expensive. And it's not completely incorrect, because in many places or in many kind of technologies and recycled materials are very expensive. They are sold at premium. But how do we solve for that is really by creating more awareness. So a consumer like me can say, instead of buying 3 things, I'll buy 2 secondhand. Instead of buying 10 things in a year or in a season every new time, what can I do secondhand? What can I do recycled material? How do I make that mix in my own wardrobe? So that needs to come there. But it's not all the consumer's responsibility. It really has to come from brands also in providing the right options to the consumer. If you are going to give only 5% or 10% of your portfolio as recyclable material, or let's say sustainable, and the rest of it completely normal at much cheaper prices, a lot of the times consumers will pick cheaper prices. जी, जो बात कंज्यूमर्स के एंगल से हो रही है, नीलेश ये बताइए कि हमने एक हिचक भी देखी है कि सेकंड हैंड कपड़ों को खरीदने की जब बात आती है, क्या कारीगरों को भी मुश्किल होती है इस हेजिटेशन से डील करना कि कोई कंज्यूमर नहीं मिल रहा है कि ये सेकंड हैंड कपड़े हैं, दोबारा बनाए गए कपड़े हैं, हमको नहीं चाहिए? आई थिंक मुझे लग रहा है कि अपसाइकलिंग आज का फैशन स्टेटमेंट है, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम ये है
कि लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि पुराने कपड़े में से बनाया है तो चीप होगा, कारीगर ने बनाया है इसलिए चीप होगा। तो आई थिंक द क्वेश्चन इज हु रन्स द मार्केट? द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट वेल नोन रन्स द मार्केट। तो जब कारीगर ये चीज बनाता है, अपसाइकलिंग करता है, तो उसका नाम बड़ा नहीं है, इसलिए लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि आर्टिसन ने बनाया है, वेस्ट कपड़ों से बनाया है, तो वो कम प्राइस का होगा। तो मुझे लग रहा है कि कारीगर क्लिनिक जो आर्टिसन को ब्रांड्स डेवलप करता है, उनके नाम को पावरफुल बनाता है, उनको मार्केट में बिजनेस करना सिखाता है, तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आर्टिसन का नाम मजबूत होता जाएगा तो ये नैरेटिव को शायद हम लोग चेंज कर सकते हैं। All right, Raman, I wanted to ask you also about, I think you want to comment on that, but also I wanted to ask you, Priyanka was talking about a lot of, technology required for this. Is this something which you're looking for help from the government on this? Also, we're talking about, in India, how to reduce the waste, the textile waste and the clothes waste. But tell us about internationally, what is being done on this issue and also to make more eco-friendly clothes. So first I would like to comment, Sure. adding on to Priyanka. I think the awareness about what is happening is not there. Recycled poly, recycled cotton, remade cotton is happening in India in a very, very big pace. So I think those stories needs to be covered. Reliance has already come up with a recycled polyester yarn. Ludhiana is one of the major sectors for making the yarn again, and it is cheaper, it is not expensive. There are limitations of quality standards, but most of the brands are taking it. In fact, domestic brands are using recycled poly in a major way. And there are mills which have come up who are recycling the cotton fabric waste also. And it is happening in a mass production in India. So I think that awareness is also missing. So we need to work on showing those stories also, which we are trying to do. So they can be repeated in other parts of the country. People can realize, you're saying Ludhiana, so maybe an example somewhere else Ludhiana for the is doing industry. recycled polyester yarn. So it is recycled from fabrics. And cotton fabrics are also getting recycled. You can't do one trouser and upscale it, make it wear with somebody else. There are a lot of emotions. But that trouser can be converted into a yarn, and again you can make a fabric. So there are no emotion, and it's an industry. पर अमन एक जो बात नीलेश भी कह रहे थे कि प्राइसिंग के मोर्चे पे अगर अपसाइकल्ड है, स्टाइल स्टेटमेंट है, फैशन स्टेटमेंट है कि आप ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन ये महंगे कपड़े हर किसी की पहुंच में नहीं आते, तो क्या प्राइसिंग के मोर्चे पर कंपनियों को आगे आकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि सबको एक्सेप्टेबल हो वो प्राइस? तो सबसे पहली बात है कि महंगा नहीं होना चाहिए, तो इसको इंडस्ट्रियलाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको बहुत स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट विल बिकम एक्सपेंसिव, लेकिन आप उसको इंडस्ट्री बना देते हैं, आप मास प्रोडक्शन में चले जाते हैं, तो वो चीज़ सस्ती हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी, अगर कोई अपसाइकल्ड प्रोडक्ट पहन रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उसको जानना चाहिए कि मैं इसके कारण मैं कितनी माँओं को, कितने बच्चों को, कितनों को मैं भला करने वाला हूँ। सो ये स्टोरी हैज़ टू बी बिगर देन अ प्रोडक्ट। सो जो प्रोडक्ट है वो बोले कि हाँ मेरे बोलने से, पहनने से इतना इम्पैक्ट आने वाला है, तो वो स्टोरीज हाईलाइट नहीं होती हैं। Like, well, that's what this campaign is about, to highlight these stories. Like organic cotton, विदर्भ में सबसे ज़्यादा सुसाइडल डेथ्स हुआ करती थी। बिल्कुल। किसान जो हमारे सेंटर में थे, अब वो स्टोरीज इतनी हाईलाइट हुई, उसका इम्पैक्ट इतना हाईलाइट हुआ कि वाई वी शुड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कॉटन। वो इसलिए नहीं कि वो पेस्टिसाइड से ख़राब था या इंसेक्टिसाइड हम डालते थे, लेकिन उसके इम्पैक्ट के कारण वो ऑर्गेनिक कॉटन का यूज़ एक्चुअली वेस्ट नहीं किया। मतलब दे मार्केटेड इट सो वेल दैट दे आर एक्चुअली सेविंग सो मेनी फार्मर्स फ्रॉम इंडिया। So I think those initiatives, impact of a T-shirt और a कुर्ता, वो stories highlight नहीं होती हैं। I think brands को, जो भी brand बना रहे हैं upscaling के, उनको अपनी stories को बहुत बड़ा करना है। All right. Well, we have been highlighting some of those stories right here on the campaign, and I'd like to now thank all our guests for joining us, Raman Datta, Priyanka Khanna, and Nilesh Priyadarshi. Thank you so much for coming on to this show and being a part of our campaign.
Now, back in May, during the launch show of this season of Clothes with a Conscience, we had introduced you to Malhar Kalambe, the founder of Beach Please. This is an initiative that brings together volunteers to clean beaches, riverbanks, and even mangrove forests, collecting and disposing of thousands of tons of trash. Discarded clothes and textile waste form a substantial part of this trash. Malhar uses his social media reach to create awareness among young people about environment and conservation. In much the same way that Malhar has a team of volunteers, our next guest has a team known as Safai Sathis. I'd like to welcome onto the show Rosalind Pereira, co-founder of AMHI. Rosalind, thank you so much for being a part of this program, and do tell us a little about AMHI and what it does, and how much of trash is collected by the Safai Sathis from the beach is textile waste, if you have an estimate of that. Hi, thank you for inviting me on the program. So Project AMHI, which is under the Alibag Solid Waste Management Association, looks at the solid waste management of 10 villages in Raigad. We look at an area of around 36 odd square kilometers, employing Safai Sathis. Within these 10 villages, our collection per month is 10 tons. And we've been doing this for the past few years. Relevant to this program, within the 10 tons that we collect, we managed to collect textile waste of about 500 kilos a month. Now, earlier in this program, somebody had said that, waste that is collected from the beaches are so bad and contaminated that it becomes difficult to recycle. That was just the problem that we thought that we should address. And we actually pick them up, segregate them, clean them, and then extend their life by donating them to various organizations. Sama Gunj, I suppose they were featured on the program, and also Adivasi hamlets along. The idea being to increase the lifespan of the garment. Now, this is something that we do in only 10 villages. If you only take Raigad has 2,000 odd villages. So the potential to recycle almost 10 tons a month is there if there are the systems in place, if there is the infrastructure. Ours is a small organization. It is a citizen-funded organization. We can do more if we get adequate amounts of funding, whether from the industry, association, from the government in terms of from the government in terms of stricter pollution control norms, in terms of segregation incentives and such. रोज़लिन, ये बताइए कि आप कैसे लोकल कम्युनिटी को साथ लेकर इस वेस्ट मैनेजमेंट की मुहिम से जोड़ती हैं? क्या आप जो वेस्ट इकट्ठा होता है उसका कैसे और क्या इस्तेमाल हो रहा है, इस पर भी आप काम कर रही हैं? एक्चुअली हम लोग 3 लेवल्स पे काम करते हैं. The first level is the district and state administration, where we have बहुत अच्छे norms है actually pollution control board के, पर उसके last length implementation में काफी दिक्कत होती है. So in terms of awareness for the district level, the administration, the panchayat, तो वो awareness programs हम लोग चलाते हैं. उसके बाद में कि the organized institutional जैसे commercial organizations, the bulk generators, हम लोग awareness करते हैं. We give them procedures in segregating the waste. और फिर finally, segregation at source is the thumb rule of any waste management program. So actually going to homes or to schools and उन्हें दिखाने के लिए कि it is not so difficult to segregate. All right. Rosalind, absolutely, segregation, in fact, should be a rule in, all cities and colonies, and, we can't have enough awareness about this. But so you deal with the waste that comes and is collected. But how do we stop this? How do we stop all this fabric also reaching the landfills pre and post consumer? And clearly there also a lot of awareness is required. So in rural area, the problem of waste management is very different from the urban areas. In urban areas, you're talking about brands. Most of the garments and the textiles that we collect in terms of when we collect are unbranded. So it is very difficult for us to even piggyback on any sort of brand initiative, right?
So in terms of, I think what one needs to look at is the production and the entry of products like this that are allowed into rural areas. And if that be, then there should be significant amount of systems in place where the producers, the sellers are required to actually pay for the segregation, for the recycling of a particular amount of things. So it's in terms of, I think very seriously one needs to look at unbranded textile waste and how does one actually prevent it, and then incentivize organizations like us to collect and to segregate, extend their life, upcycle, turn them into other products. So in terms of rural planning, I think it needs to be looked at a little differently than in what happens in urban areas. Right. Well, we definitely need more, incentives for organizations like yours. And thank you for, the amazing work that your organization is doing. And hopefully this will inspire more people for this. Thank you, Rosalind, for joining us on the program. Well, with that, we'll slip into a short break. बिल्कुल, इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा है, लेकिन कैसे हम जलवायु और अपने पर्यावरण को बचा कर रखें, टेक्सटाइल वेस्ट कम करें, ये है आज चर्चा का मुद्दा। लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास मुहिम क्लोथ्स विद अ कॉन्शियंस। हमारे साथ पपी बहन रबारी अब गुजरात से जुड़ रही हैं। पपी बहन, स्वागत है आपका एनडीटीवी में। कपड़ों को, पुरानी चीज़ों को रिसाइकल करना, फिर से इस्तेमाल में लाना, ये हमारे देश के हर छोटे बड़े घर में होता रहता है। आपके लिए तो एक कला का जरिया भी है। हमें ये बताएं कि आपके समुदाय में कैसे कारीगर कपड़ों को रिसाइकल कर कर कला को एक नया रूप दे देते हैं और इसके फायदे क्या लगते हैं आपको? हमारे में ऐसा होता है कि जो आदमी लोग कपड़े पहनते हैं सफेद, और पुराने जो कपड़े हो जाते हैं तो उसमें से हम बेडशीट बनाते हैं, गोदड़ियाँ बनाते हैं, और उससे अच्छे से धोकर अच्छे से उसकी सिलाई करके उसमें एम्ब्रॉयडरी करके ऐसा हम रजाइयाँ बनाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि ये पुरानी कपड़े में से बना है। हर हमारे समुदाय में हमारा घर में होता है। तो हम पुराने जो कपड़े हैं, लेडीज के होते हैं, जेंट्स के होते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। उसको फेंक नहीं देते, उसको अच्छे से धोते हैं, अच्छे से बनाते हैं, तो नए जैसा लगता है। किसी को पता ही नहीं चलता है कि पुरानी गोदड़ी है या नई है। तो हम वो चीज दहेज में लेके भी जाते हैं। छोटे बच्चे के लिए भी बनाते हैं, और हमारे में आजकल सब घर पे रहते हैं, लेकिन हमारा पुराना जो व्यवसाय है भेड़ बकरियां चराना, तो जंगल में ही रहते हैं ज्यादातर। तो लोग उसमें से जो पुराने कपड़े हैं उसमें से छोटे छोटे बैग जैसे बनाते हैं, उसमें चाय, खांड, चावल, वो सारी चीजें डालते हैं। और ज्यादातर जो बर्तन होते हैं कम रखते थे, और ज्यादातर जो कॉटन के कपड़े पुराने होते थे उसको बाद में दूसरी बार सिलाई करके उसको उसमें एम्ब्रॉयडरी करके उसमें सारी चीजें रखते थे। तो ऊंट के ऊपर वो रखने में भी ठीक रहता था, और हमारी जो सारी चीजें कॉटन के कपड़े में ही रखते थे। हमारे जो दादी है, माँ है, वो सारे लोग बुजुर्ग लोग है, वो उसमें ही काम करते थे। क्योंकि हमारी समाज में पहले बर्तन नहीं थे, बर्तन कम थे, क्योंकि पीतल के 2-3 होते और कांसे के कटोरे हो, और उसके अलावा ज्यादातर कॉटन के कपड़े जो पुराने होते हैं उसमें से हम काट कर दूसरी नई चीजें बनाते हैं। भाषा में बैग बोलते हैं, लेकिन हम उसको कोतरिया बोलते हैं। और आटा डालने के लिए हमको पुराने जो कपड़े होते हैं उसको
दूसरी बार सिल के उसमें आटा डालते थे। ये तो बहुत बड़ी हमारी ये तो ऐसी जी पबी बहन, ये तो बहुत अच्छा जरिया है। आप कह रही हैं कि ना सिर्फ पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, बल्कि स्टोरेज के लिए भी आप लोग रिसाइकल करते हैं पुराने कपड़ों को। और हमारी समाज की जो कपड़े हैं या जो फिर जो कला है, वो धरोहर है, हेरिटेज है, हम सबको गर्व है। तो बहुत सारा दिमाग भी लगाना पड़ता होगा, रिसाइकल कैसे करें, क्या डिज़ाइन बनाएं। और ना सिर्फ आपके समाज के लोग, अब तो मार्केट में भी आपके बनाए कपड़ों की डिमांड होगी अभी। ये जो मैंने आपके सामने जो गोदड़ी रखी है, ये पुराने कपड़े में से बनाई है हमने। ये है पुराने कपड़े में, जो इसमें छोटे छोटे जो कटके लगाए हैं, और हमारे जो ब्लाउज होता है, ब्लाउज पुराना हो जाते हैं, उसमें से अच्छे अच्छे का जो टुकड़े होते हैं वो साथ में जुड़ के हम लगाते हैं। उसमें क्या होता है कि ये पुराना जो कपड़ा है वो भी काम लग जाता है, एक नई चीज बन जाती है। दूसरा, पर्यावरण का भी फायदा होता है, पर्यावरण को ये इसमें से कोई नुकसान भी नहीं होता है। जी जो बात मैं कह रही थी, क्या मार्केट से भी अब डिमांड है? ना सिर्फ आपके समाज में इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बाहर भी बाजार में इसकी डिमांड है, आपके बनाए कपड़ों की लोग खरीदते हैं? मार्केट में डिमांड है, लेकिन जो मार्केट में ये चीज हम बनाते हैं, कस्टमर को हमें बताना पड़ता है कि ये वेस्ट में से हम लोग वेस्ट बनाते हैं। जो इसकी जो स्टोरी है वो कस्टमर को बताते हैं, तो उसको बहुत खरीदते रहे, लेकिन उसको ये जो बात है वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे फायदे होते हैं। पर्यावरण के भी फायदे हैं, और जो दूसरी चीज के वो सस्ता भी होता है। अच्छा, और आपके साथ 300 औरतें और भी काम करती हैं, इसके बारे में बताइए, कैसे आपने शुरू किया था? क्या? आपके साथ और भी 300 लोग काम करते हैं, तो आपने एक तरह से उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, उसके बारे में बताइए कि और आपने शुरुआत कैसे किया? मेरा सपना तो मैं बचपन से था कि मैं कुछ कर सकती थी, लेकिन बचपन में हमारे बहुत सारी परेशानियां थी, क्योंकि जो मैं छोटी सी 5 साल की थी तभी मेरा पापा एक्सपायर हो गए थे। तो हम घर में 3 बहन थी, भाई नहीं था, पापा नहीं था, इसलिए बहुत सारी परेशानियां थी। एक मेरी माँ थी, हमको खिला पिला कर बड़ा कर रही थी, वो अनपढ़ थी। तो उसके बाद, क्योंकि जो कुछ करना है वो लोही में होता है, पर उस करने में हमें बचपन में तो हमने मौका नहीं मिला काम कर। ये सारी चीजें हम बचपन में घर में सीखे, माँ करती थी, दादी करती थी, लेकिन मार्केट तक जाने का मौका नहीं मिला। बाद में मैं ससुराल आई, ससुराल आई तभी मैं जब पापा के घर काम करती थी, ऐसे ही करती थी। तो एक बार मेरे हस्बैंड ने बोला कि इतनी अच्छी तेरे में कला है कि वेस्ट में से बेस्ट तू चीजें बनाती है, इतना अच्छे क्वालिटी से है काम करने की, तो तू अपनी गांव की जो महिलाएं है उसके लिए कुछ कर। तो मेरे को बात तो ठीक लगी, लेकिन मन में एक डर था कि मार्केटिंग इसकी नहीं मिले तो मैं क्या करूंगी। तो उसके बाद हमने हमारी जो समुदाय की 5 महिला थी उसको बोला कि अपने ही गाँव में मेरे कोई छोटा सा बिजनेस करना है, आप मेरे साथ काम करोगे। तो उन महिलाओं को सबसे ज्यादा खुशी हुई कि गांव में काम मिलता है तो हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी, well, thank you so much पबी बहन for joining us and sharing your story। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Quite an inspiring story there, and about recycling and how she wanted to do it from a young age, she said, and was encouraged by her husband. So remarkable story there. Now, one way of recycling clothes and keeping them out of landfills is something is giving them away to someone, and we often do this in our homes and neighborhoods, to NGOs, those less fortunate, even younger people in the family. But what if it is a uniform or several uniforms that accumulate over decades of service? Well, here's the answer from Clothes with a Conscience. India has the world's second largest military force with approximately 1.4 million active military personnel. This includes the men and women who serve in the Indian Army, Indian Air Force and Navy. During the course of their military career, our defense personnel wear different uniforms which change based on rank, duty and occasion. Over the years, that amounts to many, many pairs of uniforms per soldier. When I retired from the Indian Army about 4 years back, so the big question which came to my mind was, what do I do with my
whole lot of uniforms. Any average officer will have about at least 8 to 10 pair of uniforms at the time of retirement. And particularly so I knew in Indian Army, we had been facing this issue, what is the correct way of giving a graceful disposal to a uniform. And that is how the Sehwaj Naseem Foundation was born. The uniform is a special place for us. When you give it for a cause, the purpose, you know that the uniform is going to the right place, it has value for the person who's going to use it, and you feel satisfied that not thrown away my uniform, but given it for a good cause. The foundation collects old uniforms in a variety of ways. Retired officers bring them to the workshop, the foundation organizes special drives to collect them, or the old uniforms from various cantonment areas, academies and headquarters are sent in via courier. Once the uniforms are received, the team then carefully checks for any medals, insignia or name tags and removes them with due respect. Then the process of upcycling these uniforms begins. The Sehwaj Naseem Foundation works with associate NGOs and teams of skilled people who use either the cloth or the yarn in the uniform to make new products like school bags, carry bags, laptop bags, files, bottle covers, face masks, blankets, aprons, bibs and other such useful products. These products are then donated to those in need, especially children and those in old age homes. Any earnings from the sale of the products are sent to the Martyrs Fund. Every part of an old military uniform is put to use, even the katran or the leftover scraps of cloth. We are piling the rags, which is called katran, in more than a ton. So we have got a theme called Har Katran Kuch Kehti Hai. So from those katran or rags, we have started making small stuffed toys so that it can reach those children who have never played with a new toy. So that is my message. Be a responsible citizen, be a responsible corporate house and contribute toward the society in whatever way. Right, so that was a report about how to respectfully put old and unused uniforms to productive use. And we're moving now from service uniforms to a uniform of a different kind, the uniform of the youth, jeans. We've all heard and read about how vast quantities of water is required to produce a pair of jeans. Growing cotton is resource intensive. So then it is twice as wasteful to throw away a pair of jeans or denim of any kind. Well, you won't have to if Nirvan Somani has his way, and he joins us now in studio. Nirvan is the founder of Project Jeans, and I believe it was a statistic, Nirvan, that got you going as far as this project goes. So just tell us about how it began. Yeah, so in 2019, I came across a post by the UN on social media that stated that it takes around 10,000 liters of water approximately to make a single pair of jeans, and that was really startling to me. And I researched further into the material, and basically 10,000 liters of water is equivalent to like 13 years worth of drinking supply for an average human. And just looking at my own closet, I had literally a lifetime worth of water just lying there, and I wanted to do something about it. And around the same time, I was like seeing a lot of people in my family donate blankets to people on the road because it was the winters, and the conditions under which they live in India is obviously really terrible, especially in the cold. And I thought blankets weren't a complete solution because at the end of the day, you still don't have a place to sleep on, and how long can those blankets really last under those rough conditions? But denim is an excellent insulator and a very tough material that can last under those circumstances, and are a much better solution overall, as well as just a way to repurpose all of that waste. अपने दर्शकों को ये जरूर बताएं कि निर्वाण स्कूल में है, क्लास 12th में है, और इस मुहिम से जुड़े हुए हैं बिल्कुल 12वीं का एक छात्र जो अपने मोर्चे पर बहुत कुछ बदलने की तैयारी में है, और आप जो बना रहे हैं, जो रिसाइकिल करें, अपस्केल करें, वो आप साथ लेके आए, दिखाइए हमारे दर्शकों को. This is a denim sleeping bag, right? Yeah. So this is the sleeping bag over here. Old jeans. So it's about 2.5 kilos and made out of completely recycled material. So basically this is how the people on the street can hold it, and it just folds and unwraps into the sleeping bag itself. So yeah,
it's that's basically All right, the so the product. denim is the outer cover of it, and then you've insulated it and... Yeah, so the denim is the outer cover, and to make it comfortable, there's a filling. And the zipper is used from the actual jeans that we cut up to recycle, and all of this is recycled fabric. And how do you distribute, if you could tell us a bit about that? So there's a few ways we distribute it, primarily during the winter You can just months. hold it up a little, Yeah, so sure. your viewers can also see, yes. Yeah. Okay. Yeah. So yeah, so you collect these, you have people donate jeans to you now? Yeah, so we've collaborated with a bunch of schools, hospitals, companies like across India, like Bajaj Electric and Blue Star. And they've given us like the whole collection drives within their own, like wherever they are. निर्वाण, अगर किसी को अपनी जीन्स, पुरानी जीन्स देनी है आपको, तो आपके पास वो पहुंचे कैसे? So we get it couriered to wherever we are. And so once we have the jeans, we produce them. So in my area, I've hired about 8 artisanal female workers who were unemployed, which is like another way to empower पर कोई तरीका है आप तक पहुंचने का? अगर जो दर्शक देख रहे हैं और उनके कबर्ड में भी आपके जैसे बहुत सारे डेनिम्स हों तो? हाँ, so like they can either WhatsApp us, or we have an Instagram page which is Project Jeans. Yeah, so you can look up Project Jeans on Instagram and find out how to send your jeans across to Nirvan. Yeah. Yes, so and we're asking about the distribution as well. Yeah. So the distribution primarily in the winter months, because that's when it's really needed. And we tie up with different organizations such as the Robin Hood Army. And we go out at night in Delhi, for example, with them and actually go and distribute the jeans to different places because they know the logistics of it. And aside from Delhi, if we have any volunteers in different cities who actually want to take up that responsibility, we extend that to them and send them whatever number of bags that are available to distribute in the area. Additionally, we've also sent these sleeping bags internationally to Turkey and Syria during the earthquake crisis for the victims of the earthquake. So just like नेटवर्क बहुत बड़ा है आपका, पर निर्वाण आप जैसे लोग हमको और चाहिए, देश को और चाहिए। बताइए कि इस इतने गंभीर मुद्दे पर अगर जल्दी कार्रवाई या फिर एक्शन नहीं हुआ तो ये और ज़्यादा सीरियस होने वाला है। तो ऐसे में आप जैसे युवा जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप उनको क्या कहेंगे, किस तरह से मोटिवेट करेंगे कि वो इस मसले पर आगे आएँ और अपने मोर्चे पर, अपने पोजीशन से आगे बढ़ें और इस पर काम करें? So one of the ways our project works is through basically spreading awareness. So I've gone to many schools in the city and country to give talks about the environmental impacts of the fashion industry. And I think schools in India especially have educated us all about the impacts of firecrackers or cars and planes, but the fashion industry actually has larger carbon emissions than the entire shipping or aviation industry combined. So this is definitely something we need to bring attention to by educating the youth. And aside from that, there's a lot of things they can do to help. Firstly, support any of the projects featured in the series or any others in their own area, because they're obviously doing work within the field, and any way you can support them is great. Secondly, if you're willing to go the extra mile, and I encourage anyone who's willing to do so, to find a way to help the environment through fashion on their own. And lastly, and probably the most easy yet effective way, is to just think twice before buying a piece of clothing and not give in to fast fashion. So just think about how much everything you buy, every single piece of clothing, the value it will actually add to your life. And whenever you do get rid of your clothes, don't just throw it in the bin, don't let it end up in a landfill, and just find a better way to. I don't think we could have put that any better. Yes. It would have been a great basket for this campaign, and hearing it from Nirvan, it just shows the importance of this. So I hope this entire show has given you all a lot to think about, especially when it comes to fashion, when it comes to wastage, and we've given you all kinds of ideas of what you can do with the clothes. बिल्कुल, जैसा कि निर्वाण ने कहा, आज से हम शुरुआत कर सकते हैं ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। समाधान हैं, हल हैं, रास्ते हैं, बस उसको अपनाने की ज़रूरत है। नमस्कार। Thank you for watching.